Hi there, I hope you all are doing well. My name is Vaidehi, and first of all, Happy New Year to everyone watching this video. In this video, I'm going to talk about my relaxing 2023 morning routine and what are the changes that I'm going to follow this year. I'm going to show you everything in this video. So let's get started. First thing that I'm going to do as soon as I wake up is to stretch my body because I'm very prone to back pain and my body is not flexible at all. Now, I really want to go into spirituality and I really want to be thankful to God for a new day and new life. That's why I will always try to be very thankful to God. I love my room. मेरे रूम में बहुत अच्छी धूप आती है सुबह सुबह, so I always prefer standing there and experiencing that good feeling. I think by this point everyone is familiar with this thing, that is having warm water every single morning on an empty stomach for gut health. Before going to freshen up, I always like to make my hair, embrace myself, and this is very important for everyone to embrace yourself. Do not expect anything from anyone, be good to yourself. Next good step is to freshen up. If you have ever watched my previous videos, you know that I'm very particular with my hygiene routine. You guys can see here that मैं सारे काम आराम से करी हूँ. Previously I used to do everything very जल्दी because I used to go to gym every single morning, but this year I have been very particular with my relaxing morning routine. I'm going to apply this moisturizer which is a new launch from Plum Goodness, and I'm gonna make a video on this product for sure. उसके बाद I'll do my skincare routine and I'll get ready. It's very cold outside, so I'm gonna change into my comfortable clothes. वेल आई रियली डोंट नो कि ये किसने कहा था, बट येस डेफिनेटली अगर आप अपना बेड सुबह सुबह ठीक कर लो तो आपका आधा काम डेफिनेटली कम हो जाएगा. नेक्स्ट गुड थिंग इज़ टू ओपन द विंडोज़ ताकि फ्रेश एयर मेरे रूम में आती रहे. एंड दिस इज़ द थिंग दैट आई हैव चेंज्ड इन माई रूटीन विच इज़ प्रैक्टिसिंग प्राणायाम एंड योगा एंड बीइंग थैंकफुल टू गॉड दैट इज़ गोइंग इन टू स्पिरिचुअलिटी. इसलिए मैंने सुबह जिम जाना अभी बंद कर दिया है. आई एम स्टिल गोइंग टू जिम बट इन इवनिंग टाइम. और क्योंकि मेरी बॉडी ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, ज़्यादा मोबिलिटी नहीं है मेरी बॉडी में, दैट्स वाई आई हैव मेड सम चेंजेस इन माई रूटीन ऑफ कोर्स. Once all that is done, I love spending my time over there itself. धूप आती है, हवा आती है, fresh air आती है. That's why I love this time and that's why I said that it's a relaxing morning routine. Again, you must have seen me doing this thing in every single routine videos that I love. Taking care of my plants, watering them, and ये सारी चीज़ें मुझे खुद से नहीं आई है. All of these things has been taught by my mother. Now by this point it's 8 o'clock already and I know it's very late to go out for a walk, but मुझे इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बहुत ठंड है बाहर, so इतना फील नहीं होता है कि बाहर ठंड है. That's why I like to go out and go for a walk every morning. आई एम मैनिफेस्टिंग कि ये साल मेरे लिए बहुत ही अच्छा हो, पॉजिटिव हो, मैं काम हो जाऊँ, मेरा शॉर्ट टेम्पर बिहेवियर कम हो जाए. आई रियली वांट टू बिकम काम. आई वांट टू गो इनटू स्पिरिचुअलिटी. आई ऑल्सो वांट टू फोकस ऑन माई बॉडी, माई मेंटल हेल्थ, माई फिजिकल हेल्थ, एंड आई थिंक दिस ईयर इज़ गोइंग टू गिव मी एवरीथिंग दैट आई वांट. आई एम अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, इसलिए मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत इम्पॉर्टेंट समझती हूँ एंड इट हैज़ मेड मी वेरी स्ट्रॉन्ग ओवरऑल. मेरा जो शॉर्ट टेम्पर्डनेस है वो काफ़ी कम हो गया है बिकॉज आई कैन सी सो मच लव इन माई हाउस इटसेल्फ. I have been very focused towards my health and I want to continue that thing this year as well. If you have sweet tooth, you should definitely try this recipe, that is oats, garam दूध and peanut butter I am using from my fitness. और इनका जो एक कॉम्बिनेशन है मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है. It tastes really good. Now it's time to do journaling. So I like to write what I want, what I need, जो मुझे चीज़ें करनी है, and I don't follow a fancy journal for this thing. I just have a simple diary with me and that's enough.
Now just like everyone else, I like to go through Instagram reels, YouTube shorts, YouTube, और उसके बाद मैं काम करना चालू कर देती हूँ. I prefer working और cleaning my space once I'm done with my breakfast because इससे मेरी body move भी हो जाती है, at the same time काम भी हो जाता है और जो भी मैंने breakfast किया है वो digest भी हो जाता है. And after that I'm gonna go and take an amazing shower. और क्योंकि ठंड भी है आजकल, so गर्म पानी से नहाना is definitely very important for me. I have definitely not included my body care routine and skin care routine because I think it's very unnecessary in this video. Moving on, this is the physique that I have right now और काफ़ी ग्रोथ कर लिया है मैंने. डेफिनेटली आपको इस वीडियो में उतना समझ में नहीं आएगा, बट आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाट आई हैव अचीव्ड. मैंने थोड़ा फैट भी गेन कर लिया, बट येस डेफिनेटली आई एम गोना वर्क ऑन इट दिस ईयर फॉर श्योर. आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल, इन्फॉर्मेटिव, और अगर आपको पसंद आया होगा देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड आई विल डेफिनेटली कंटिन्यू डूइंग यूट्यूब दिस ईयर फॉर श्योर, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय, हैप्पी न्यू ईयर.